Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong detector to set this right, swept by these emotions. They may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. सो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डिसीजन लेने में प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई लोग हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं बट कई बार वे फील करते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है या वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. तो ऐसे में वो सोचते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग डिटेक्टर हो जो यह काम अच्छे से करे. सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे प्रोविजंस को इजीली चेंज नहीं होने देता जिसकी हेल्प से सिटीजन्स के राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्शन मिलता है. फ्रॉम द अबव डिस्कशन you will understand that the constitution plays a very important role in democratic societies. Now let's try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideas and rules by studying some key features of the Indian Constitution. Now, key features of Indian Constitution. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's Constitution. फ्रीडम स्ट्रगल की ड्यूरेशन में नेशनलिस्ट ने प्लानिंग की कि फ्री इंडिया किस टाइप का होना चाहिए. अंडर द ब्रिटिश रूल जो रूल्स इंडियंस ने फॉलो किए वे सभी रूल्स ब्रिटिशर्स के थे. उसमें हमारा बहुत कम रोल था. इसलिए आफ्टर फ्रीडम वे चाहते थे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड ऑल्सो टू अलाउ पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, उसके क्या फंक्शंस होने चाहिए, ये काम केवल एक पर्सन का नहीं था बल्कि इसमें लगभग 300 पीपल ने पार्टिसिपेट किया जो 1946 में था. 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने नेक्स्ट 3 इयर्स तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में मदद की.